Hi everybody. How you doing? आरंभ 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 है प्रचंड। हो गया 6 o'clock। हमने तो शुरू कर दिया यार। मेरे कंप्यूटर पे 6 बता रहा है, आपका पता नहीं। आ गया। Hi Princey, Ananya. Yes, I'm so excited. So am I actually. So I can see the messages here. This is very nice. And मैं आप लोगों के लिए सच बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही मैंने शर्ट पहना है, क्योंकि मुझे लगा कि माइस्ट्रोस को शर्ट पहनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यार टी शर्ट में ही घूम रहा हूँ। और क्या हुआ है कि लॉकडाउन से पहले मेरा दिमाग नहीं था कि अपने एसी वेसी को चेक किया जाए, तो घर में कुछ एसी वेसी कुछ नहीं है, मगर इसलिए पंखा चलेगा। अगर पंखा का हल्ला आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप बताएं, हम पंखा भी बंद करने को तैयार हैं आप लोगों के लिए। कैन यू हियर मी? थम्स अप इफ यू कैन हियर मी। गुड इवनिंग सर। मुकुल, हाय। Rhythmic Rachit, hi Rahul, glad to see you. All right, okay. So we can leave the fan on, right? I'd much rather have the fan on. Or ये पानी है। Okay. So should I begin or should we wait for more people? शुरू कर लेते हैं ना यार, क्यों? अक्षत राज गुप्ता कहते हैं बिग फैन ऑफ योर म्यूजिक। हाय। नयन पृथी, नमस्कार। थम्स अप, लाउड एंड क्लियर। ऑलराइट, यस सेज हेलो प्रोसेस, सेज यस। ऑलराइट, गुड इवनिंग डॉक्टर विकास मेहरा, प्रिंसिपल मिलान, एबी माइक। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप सेइंग हेलो टू यू गाइस। आई हैव सेड हेलो टू एवरीबॉडी, एंड बीच में अगर कुछ सडनली ऑसमली इंटरेस्टिंग दिखा तो बंदे, मतलब एम आई हियर टू सिंग और am I here to talk? I can sing. मैं तो 1 घंटा बात कर सकता हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्या करूँ? गाना गा दूँ? आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या हो जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। Song written by Piyush Mishra with arrangement by Hitesh Sonik from the film Gulal, in which I sang one song solo and Ashim and I sang a song together as well. And आरंभ किसी ने लिखा था, उसको देख के मुझे लगा कि आरंभ है प्रचंड से शुरू करते हैं। तो यार, जैसे कि आई एम अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू आर म्यूजिशियंस, ओके, बिकॉज वी आर सपोज टू डिस्कस हियर टुडे कि यार अब करें क्या। अब तो आ गया लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली एट सम पॉइंट, इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। उसके बाद I mean, me and the band have been talking to each other, and our internal assessment is that before October or November, there will be no live shows. None at all. Everything will be like this. And in fact, I'd like to tell you that it's through Songdew, I think, that we had done one of our first, our only live concert to date years ago. And I think that's the way it's going to be, at least for the next few months. तो तब तक हम क्या करें? तब तक क्योंकि हमारे पास तो कोई पीएफ होता नहीं है, और ज़्यादातर म्यूजिशियन कंगाली होते हैं, तो इतना कुछ खास सेविंग भी नहीं है। फिर बंदा सोचता है यार घर कैसे चलाऊं, बंदी ये बंदा या जो भी है सोचते हैं कि घर कैसे चलाऊं।
So it's going to be difficult for all of us, but do you want me to go back and answer a few questions before we start embark? What is the secret of your high energy, asks AB Mike. कोई secret नहीं है यार, मैं खुद मतलब I have no idea. Maybe I'm lazy most of the time. So when I come in front of a screen or a camera, or maybe when I'm on stage, I get my energy high. I actually get my high in a feedback loop from the audience. But even otherwise, I'm a generally bouncy guy. I'm one of those irritating people who gets up in the morning and starts singing. Much to the irritation of my wife and a lot of my friends. कभी-कभी उनके घर रहता हूँ और मैं सीटी बजाते हुए घुसता हूँ और वो कहते हैं यार चुप रहे यार, अभी तो सवेरा हुआ है, कॉफ़ी का कप पीनी पिया, तू सीटी क्यों बजा रहा है यार, चुप रहे. तो मैं कहता हूँ अब मैं क्या करूँ यार, मैं ऐसा ही. Okay, that's the secret. There is no secret, in other words, to my high energy. How did you start your journey in music? I started my journey in music actually when I was in school. This is from Rhythmic Rachit. How did you start your journey in music? And then speedy left hand technique, and then how do you define indie music? Let's get to these one by one. I was in school, and luckily I was in a school where they used to encourage singing and playing music, and we used to have classes in music, and I had a bunch of guys in my class who used to play the guitar, so I thought that was very cool, and I started learning guitar. In school, luckily we had somebody who was a very, very good bass player come in and give guitar lessons. उन दिनों में सोचो 1979 में 25 रुपए महीने के 4 लेसन. 25 रुपए बहुत होते थे उन दिनों में. मैं बता देता हूँ, 1979 की बात है, 77 actually when I started. So I learned how to play guitar first, then I quickly switched to learning how to play bass because I joined a band and they said, okay, you play bass. मैंने कहा bass क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ये होता है. तो मेरा पहला कॉन्सर्ट हमारे स्कूल में ही, I was playing an electric guitar on the bass strings. That was my bass playing. And I quickly bought a bass guitar, a local देसी bass guitar. 125 रुपए में खरीदा मैंने अपने टीचर से, उनका पुराना देसी bass guitar with very bad strings, man. Those strings, it was good to learn on those strings because my fingers used to bleed. I had छाले और फिर वो फूल जाते थे और वो सब कुछ किया हमने. फिर वो हम सुई गर्म करके उस छाले में एंगल पे घुसाते थे, वो पानी निकालते थे, वो सब बहुत हुआ है. But I learned the most with the people I played with. I played luckily enough in the beginning with people who were way better than me. There was a guy in my school who was a fantastic guitar player called Johnny Packiam. In fact, his brother Julius Packiam nowadays makes music in Bollywood. And Johnny had this amazing guitar technique, and he introduced us to great music such as Weather Report, Return to Forever, and Al Di Meola, and also the famous what's his name, yaar, the crazy rock guy, Frank Zappa. So I got to learn all this and hear all this, and I got to hear Stanley Clarke, the bass player, when I was barely 17. So I learned from there. Secondly, speedy left hand technique तो practice है यार, और कुछ नहीं है. ऐसे practice. There's no two other ways to getting over learning speedy. Actually, I'm not speedy at all. If you go and watch videos of people who are truly speedy bass players, then you will understand why I say it. There's a man called Victor Wooten, fantastic bass player out of New Orleans, and you should hear him. Man, he is so incredible. He plays with what's his name? Yaar, again, dekho. The guy who's a mandolin player from New Orleans. I'm getting too old. Anyway, Victor Wooten, check out the name. Alright? Who's my favorite bass player? Well, I have too many. I have no favorite bass player. That's the wonderful thing about being a musician. There are so many great musicians out there, you don't need a favorite. I can never match my favorite bass players in technique. I've given up trying. I think I have kind of evolved my own style of playing, especially with the years of playing with Indian Ocean. But I always used to be a fairly busy bass player, even when I was in school and college. In fact, in my college rock bands, I used to usually not listen to the bass played in the song. I used to hear the song and try and come up with my own bass lines. And I took part as part of the band in a musical opera where I had to make my own bass line for about 40 songs. That taught me a lot.
and with the other band members chipping in and saying, यार अभी ये बजा, अभी ये मत बजा, ये ट्राई कर, वो ट्राई कर. तो ऐसे ही सीखा है मैंने. बाकी आप क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना, आई एम नॉट वेरी गुड एट रीडिंग दोज क्वेश्चंस. So if you ask me more questions, so please keep asking me. I will say that the other thing I learned, which is really difficult to do, is to play a reggae bass line and sing. One of the most tough things I've ever done in my life is to play a Bob Marley song. I wanna love you and treat you right. And I was playing bass. And that bass is okay. And treat you right. How do you sing all that? Because बज रहा है और ऊपर से I wanna love ya, man, treat you right. बजे जा रहा है. Not easy. Very difficult to do. Very difficult to not make your voice go like it's going with the notes. And that's something which I practiced and finally got close to. That's why Sting, for example, is amazing. How can I write songs, sir, says Untitled Chapter. Sir, is it necessary to come Mumbai in 2020, especially for musicians? Ask somebody. It's a good question. I'm not in Bombay. I have never been to Bombay as a permanent resident. I have been to Bombay only for work, for recordings. The longest time we stayed in Bombay was 2 months during the OST of Black Friday in 2004. I have never stayed in Bombay, and it depends on what you want out of life as a musician. If you want to play in Bollywood, Bombay is a great place to be because let me tell you this key. If you are hanging around with a bunch of other musicians and somebody needs somebody, if you've just met them the last day, you will pop into their head and they will call you. And they will not have to pay you to fly down to do the recording. If you mean कि अगर मैं यहाँ से recording कर दूँ और उन्हें भेज दूँ, it's not that easy because you always need the inputs of the music director when you are playing for somebody else. If you're playing for yourself, then there is no need to go to Bombay anyway. The advent of digital technology has allowed us to do all the recordings we want to do anywhere we are, in our own homes or in studios, maximum for dubbing the vocals and so on and so forth. Somebody here said that they are also a fan of Marcus Miller. Young man, what a bass player. Fantastic. Patitucci, another fantastic bass player. How can we fight with musicians block, sir? यार अब मैं तो बम्बई में हूँ नहीं, कोई म्यूजिशियंस ब्लॉक बम्बई में होगा, यहाँ पे दिल्ली में तो है नहीं. I'm a big fan of BTS. I have no idea who is BTS. And Taylor Swift. How do I grow in English singing? Do you speak English? If you don't speak English fluently, it's going to be very difficult to sing in English. And English singing करके कोई चीज़ नहीं है. Frankly, singing in English है, और singing in English में आप अगर अंग्रेज़ी बोल सकते हैं तो आप गा भी सकते हैं. On the other hand, I can sing in several languages which I do not speak. That's because you know the song. And you have to grow your own voice. You know, ये जो type singing है वो एक अलग type का singing है. अगर आप 60s, 70s, 80s, 90s के गाने अंग्रेजी में सुनेंगे, आप देखोगे कि पॉप म्यूज़िक में जो है गाने का स्टाइल बदलते गया है. आप जितने सारे आपको जो स्टाइल सबसे अच्छा लगता है उसमें आप आगे बढ़िए. बी ओरिजिनल, डू नॉट कॉपी. ओके. अमन झा, राहुल, अमन झा कहाँ चले गए यार, गायब हो गया. अमन झा, will you come back please. It sounded like an interesting question. Suddenly the question is faded. I don't know what happened. It comes and goes. Okay. Why don't we have mainstream global rock artists from India? We have so many great vocalists and instrumentalists here. Your thoughts on that? Well, because like I was telling about Bombay, the same thing applies across the world. We do not have mainstream. We have some acts. In fact, Orange Street, there's a band called Orange Street that used to go and play in festivals all across Europe. We have had a local band that has Sky Harbor. Sky Harbor goes and plays all over. So there are some bands that are playing foreign gigs, rock gigs. But I'll tell you a story which might explain to you
why we don't have mainstream. इसमें बहुत सारी चीज़ें. Way back, रॉक मशीन करके एक बैंड था जो आज जिसका नाम है इंडस क्रीड. रॉक मशीन won when videos were a big thing. They made a song called Pretty Child and they made a video for that. Okay, that video won the MTV Viewers Award. And these guys went to LA to pick up the award. So, LA, glittery, this, everything. So they said, okay, let's use the contacts we made to try and contact people to get a recording contract for our band Rock Machine. So when they went and met various executives in the industry, those executives said, guys, you say you're from India, but you sound like 100 bands that we have here. Why should we record you rather than those bands? What stands out? And this was something that Rock Machine went and thought about. So, one, they changed their name to Indus Creed. Two, they added tabla. In fact, a man called Shrikant Sriram, who's an excellent bass player, played tabla with them because he's a tabla player as well. But it didn't sort of work for the recording industry. So, इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो है कि आप अगर दूसरे लोगों के संगीत को कॉपी करोगे तो आप में और उनमें कुछ खास फर्क नहीं होगा. और ये सोचो कि इट्स लाइक a tabla player in America trying to compete with 1,000 tabla players in India. उसके तबला प्लेइंग में ऐसा क्या है जो यहाँ के तबला प्लेयर्स में नहीं है? So why would they take him or her rather than an Indian tabla player? Same. If you're going to play rock, you have to sound different. You have to sound different enough. Okay? ओके इंद्रनील चक्रवर्ती का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया क्वेश्चन आया कि सर मैं ना फंस गया कि मैं नए गाने कैसे बनाऊं. मेरे दिमाग में ना वही मेलोडीज आ गई रहती. मेरा एक सुझाव है जो आप ट्राई कीजिए अगर आप ट्राई कर सकते हैं. मैंने नोटिस किया है कि जब मैं गिटार के साथ बैठता हूं मैं अलग मेलोडीज बनाता हूं. जब मैं बेस गिटार के साथ बैठता हूं तब मैं अलग मेलोडीज बनाता हूं. और जब मैं पियानो के साथ बैठता हूँ मैं फिर अलग मेलोडीज बनाता हूँ. और जब मैं सैक्सोफोन बजाता हूँ एक चौथे टाइप की मेलोडी निकलती है. आई सीरियसली रिकमेंड दैट यू ट्राई एंड चूज different instruments and see whether that helps. Okay, there was a nice question about my bass which said, why have you chosen Music Man? Why not any other brand? So here's the story. Like I told you, my first guitar was an Indian bass guitar which I bought for 125 rupees in 1979. Okay, which is 41 years ago. सोचते ही मैं कोरोना आ गया. फिर मैंने 1981 में 2 साल बाद एक बीटल्स हॉफनर ओरिजिनल that violin shaped beetle bass I managed to get. And I played that all through my college years, 81 to 84, 85, 86 when I was in IIT Kanpur, I played that. Then I went away to America. And when I came back from America in 1990, I joined a band and I wanted to get hold of a better bass. So then I bought an Ibanez in 1992. And on that Ibanez, I recorded several of Indian Ocean's albums. I in fact even recorded, I played bass on Boonde. Am I back on? I was suddenly totally disconnected. Am I back on? I think I am back on, yeah. So in 1992, in 2002 we went to the US as Indian Ocean for the first time. And I went to, there's a music street in Manhattan in New York. वहाँ पे जाके मैंने ये म्यूज़िक मैंने कुछ 50 गिटार बजाए और ये म्यूज़िक मैन बहुत सुंदर लगा मेरे को. मैंने खरीद लिया. मेरा बजट था 600, मेरा बजट था एक्चुअली $300 और मैंने $650 की गिटार खरीद ली. और वो गिटार इतना अच्छा है कि आज तक, जो कि 18 साल बीत गए हैं, मैं अब भी वही बेस गिटार पसंद करता हूँ. हर बार मैं जाता हूँ बाहर मैं दूसरे बेस गिटार चेकआउट करता हूँ और उनमें मेरे को वो मज़ा ही नहीं आता जो मेरे को इस गिटार में आ रहा है. सो आई जस्ट लक्ड आउट एंड आई सॉ नो रीज़न टू चेंज माई म्यूज़िक. ऑलराइट. Okay, there's a guy. Okay, when I make emotional songs, people love it, but when I try some new genre, people don't like that. What to do? इसमें people की ऐसी की तैसी तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम ना genre को छोड़ दो.
तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में कैसे गाने बनते हैं, उन्हें गाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार के गाने हैं तो प्यार के गाने गाओ, और लोगों को पसंद आए न आए, आप गाते रहिए जो आपको पसंद है। Sing what you want, sing from the heart. Do not copy, because you are not that other person. You cannot copy anybody. You may try, but you're not going to be that person, because singing comes from your entire body, your entire brain, your entire life influences your singing, man. Do you realize that? So you have to sing with your mind and your heart and your passion. Forget what other people say. I will tell you one nasty thing about Bollywood is that they expect you to sound like somebody else. Don't do it. Because I don't get called to sing the occasional song in Bollywood because I sound like anybody else. I get called to sing because I sound like me. Okay? Stick to it. I know it's tough. It's much easier to copy. It's much easier to be known as the man who can sing like Arijit Singh. But Arijit Singh himself has now started singing in his own voice. Earlier, you could ask Arijit and he would sing like Mohit Chauhan, or he would sound like that person, or he would sound like that person. No. It's like, why is Mohit Chauhan Mohit Chauhan? There's a quality to his voice. Why is Papon? There's a quality to his voice. Why is Sunidhi Chauhan? This is what makes them stand out. Alright? Okay. Two nice questions. One from Arun Unni, that how important is knowledge of music theory to create music? Zero. You should know your theory, frankly, because that helps to enrich your music. But to make a tune, no. You don't need theory. थ्योरी की ज़रूरत ही नहीं है ट्यून बनाने के लिए यार. मैं आपको बताऊं, हमारे जो ट्रेडिशनल फोक आर्टिस्ट हैं, वो इंटरनली सुनते हुए आ रहे हैं जो गाने उनके लोग गाते हैं, और वही उनकी थ्योरी और वही उनकी प्रैक्टिस है. मगर हम लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी सीखी है. हम लोग ये समझ जाते हैं कि इसके पीछे ये कॉर्ड ट्राई करो. दैट्स अरेंजमेंट, दैट्स नॉट मेकिंग द ट्यून. ओके, if you want to be an arranger, you definitely need to know theory, because you need to learn how to harmonize. You need to learn कि किस frequency में क्या बजता है. You need to learn कि अच्छा कहाँ लगेगा. एक तो gut feeling है कि यार यहाँ पे मैं flute बजवा देता हूँ या यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ. But we tend to make the middle frequencies very very heavy. ऊपर कम नीचे कम, बीच में हम सब कुछ ठोस देते हैं. मैं ये देखता हूँ जब बहुत सारे स्कूल बैंड्स आते हैं, वो 3 गिटार प्लेयर हैं, वो तीनों सेम कॉर्ड सेम पोजीशन में बजा रहे हैं. तो क्यों भाई, अगर 3 गिटार प्लेयर होना ही है तो अलग अलग काम करवाओ ना उनसे, ताकि इट कम्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड द म्यूजिक बिकम्स richer. Right now, somebody else asked me a question that what keeps you motivated and what inspires you to make songs? Is it struggle? नहीं यार, वो जो एक मूवी आई थी ना, रॉक ऑन आई थी, नहीं, वो कौन सा था जिसपे मोहित ने सारे गाने गाए थे यार, वेयर द मैन गोज एंड हिज गर्लफ्रेंड लीव्स हिम एंड ही गोज थ्रू वेरियस थिंग्स एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्स हिम टू मेक हिज म्यूजिक. इट्स नीदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट टू स्ट्रगल टू मेक गुड म्यूजिक. म्यूजिक आपके अंदर है, और आपके अंदर अगर पैशन है तो फिर हो जाएगा. How do you find inspiration to create something new every time? Well, because I know what else I've created. I want to make things new. But I'm in no hurry. मुझे नहीं लगता कि हर महीने गाना बनाओ या वो. इसलिए तो मैं खुश हूँ कि मैं बॉलीवुड में नहीं हूँ. मैं आपको सच बताऊँ, मैं प्रीतम के साथ एक बार एक शो जज कर रहा था, हमारी काफ़ी दोस्ती हो गई थी. उस टाइम पे प्रीतम बेचारा 11 फिल्में एक साथ कर रहा था. 11 मतलब 55 से 60 गाने साइमल्टेनियसली उसे बनाने थे. When one is making songs in a certain period, one tends to fall into traps. Even though in Bollywood they give you situations and they say sad song, happy song, this time, that time. तब भी ट्यूनें तो फिर सिमिलर निकल जाती हैं. बहुत ज़्यादा म्यूजिक एक साथ बनाने का यही प्रॉब्लम है. अब मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने ऐसी गिटार पे ना, जैसे मैं आपको एक ट्यून बना देता हूँ ना भाई,
क्या हुआ, गिटार बजा, नोट्स आए कान में, दिल में, दिमाग में, मैंने सीटी बजाना शुरू किया। फिर जैसे मैं कॉर्ड बदलते गया, मैं अपने धुन को वहां ले जाते गया। राइट, आप भी ये ट्राई करो ना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इंडियन ओशन में काफी सारे जो हैं राग बेस्ड नहीं कहूंगा, पर ठाट बेस्ड, ठाट मीन्स स्केल, ओके। सो ऑल ऑफ यू, आई सजेस्ट learn some of the main thats of Indian music, both Carnatic and Hindustani. जैसे मैं आपको बताऊं, this साउथ इंडिया में इसको पहले सिखाते हैं, ना कि हमारे मेजर स्केल को, विच इज अब आप अगर ये बजाते रहोगे तो आप उसमें एक अलग सा, आप उसके मूड में घुस जाओगे। तो इफ यू टेक स्केल and start playing it. That's how actually rag are evolved. They take scale. Sometimes they have different notes going up, different notes coming down. I mean, anybody who knows classical here will be laughing at me. For those who don't know, I suggest कि थोड़ा बहुत सीख लो, ठीक है। अब दो चीज़ें आई हैं. What do you think will be live gig scene after lockdown? Any tips for online concerts, which is going to help us these days? How do you do a riyaz? रात के मुसाफिर, what's the story behind the beautiful name Indian Ocean? Okay. So let's get to what this was supposed to be about, because you know it's very easy. You guys are distracting me, man. मैं टेंजेंट पे निकल जाता हूँ यार. मेरे को दे में बतियाना इतना पसंद आता है कि मैं निकल जाता हूँ अलग अलग थिंग्स पे. So let me get back to Sudeep Shetty's question. What do you think will be live gigs scene after lockdown? There will be no live gigs even after lockdown ends, because who is going to take the chance? Okay. अक्टूबर या नवंबर तक मैं आपको लिखित में बता सकता हूं कि लाइव गिग्स जैसे पहले हमारे होते थे ना, कॉलेज फेस्टिवल या बार या होटल, ये नहीं होने वाले. ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई एंड लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए एक आप शो करो जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगा. बहुत कम, फ्यू एंड फार बिटवीन. ओके, which takes us straight to the next question, which is कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स कैसे होंगे. अब लाइव लॉकडाउन में तो आप सोलो अगर हैं, और सोलो जैसे मेरा दोस्त वैलेंटाइन शिपले हर दिन घर से ऑनलाइन कॉन्सर्ट किए जा रहा है. अगर आप वैलेंटाइन शिपले SHIPLEY के पेज पे फेसबुक पे जाओगे, हर शाम को 8 बजे वो ऑनलाइन जा रहा है. अब द थिंग इज दैट Indian Ocean has also done a couple of live Facebook things. We've done Instagram and so on and so forth. मगर इससे क्या हो रहा है? इससे आपको पैसे बन रहे हैं? एक भी पैसा नहीं बन रहा है ना. How does one, and we are all exploring the same thing simultaneously because we've never done it so far. How does one try and monetize this? And you should check out a website called nugs.net, which is been doing so in the US for years and years. They do online streaming of live concerts. But I think after lockdown ends in India, at least the band will be able to get together. So the band can play live, and there has to be some means of monetizing that live thing. ठीक है, आप बताओगे कि यार कोई मेरे को जानता ही नहीं है, मेरे को सुनने के लिए कौन पैसे देगा? भाई, हो सकता है कि शुरू में ना दे, हो सकता है शुरू में 10 लोग आए, हो सकता है उन्हें बहुत अच्छा लगे और दूसरे लोगों को बताएं इसके बारे में. हो सकता है आप उनके कमेंट्स लेके पेस्ट करें और दूसरे लोगों को बताएं इसके बारे में. अगली बार 20 लोग आएंगे, अगली बार 30 लोग आएंगे. और मेरे तरफ से ना, वी हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ मनी मॉडल वेयर समबडी सेज, यू नो, माय इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स अ लो, लाइक तू मेरे भाई 50 रुपये दे दे और मेरा कॉन्सर्ट सुन ले, ठीक है.
अब 50 रुपए is not too much money for the kind of people for whom I think are on this chat with me. Why would anybody not pay? So this, they will come up, and I'm hoping Songdew is working on this, a means of monetizing online concerts. Yes, give a small percentage of your money to Songdew, or give a small percentage of your money to Book My Show, or whatever. Because even Book My Show is busy trying to work out कि ये कैसे मोनेटाइज किया जाए, कैसे किया जाए, वो भी सोच रहे हैं. ठीक है, एक आएगा, एक या दो या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहां पे हम लोग ये कर पाएंगे. तब तक आप लाइव कॉन्सर्ट्स अपने फेसबुक से करते रहिए. और क्या करेंगे आप अपने टाइम के साथ? आप नए गाने बनाएंगे, आप अपने टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करेंगे, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप उनसे सीखेंगे, आप फ़ोन पे बात करेंगे, आप एक दूसरे के साथ इंस्टा पे एक साथ कंपोज कर सकते हैं. एक साथ तो नहीं बजा पाएंगे क्योंकि लैग आता है. ठीक है, अब ये सब चीज़ें हमें इस अगले 6 महीने में करना पड़ेगा. ओके, वेट. How do you take references from the compositions you like or love? I don't take references. I never take references. If I like it, it would have gone inside my head and it will influence me. I never consciously sit down and say, I am going to make a song which sounds like something else. Right? I never do this. And I suggest you don't either. मगर अगर आप बॉलीवुड में काम कर रहे हो तो आपको हमेशा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर एक रेफरेंस देगा. सर मैं आपको रेफरेंस के लिए ये सुना रहा हूँ. What do they expect? That I make something like that? Why should I? You leave it to me, man. You let me make something and let me see if you like it. Yeah, you can give me a brief. कि यार इसमें मेरे को मूड ऐसा चाहिए या सिचुएशन ऐसी है, मेरे को देखने दो ना आपका फिल्म, आपका रफ कट दिखाओ, उसके बेसिस पे मैं बनाऊंगा. और आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मेरे को बताना कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा. रेफरेंस मत दो. Like I'm stuck right now with somebody who gave me a reference of Les Miserables and said, I want you to make music like this for my play. That's nuts. £1 million production. आप मुझको म्यूजिक सुनवा रहे हो जो कि अंग्रेजों ने किया और अंग्रेजी म्यूजिक है, और आप एक हिंदी में प्ले कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ये होगा. इंडिया में तो नहीं, पर इंडिया में प्ले कर रहे हो रामायण के किसी पार्ट पे बेस्ड. नहीं हो सकता यार. मत तो मुझे ऐसे रेफरेंसेस. मगर politically you can't say this to the producer and the director. Okay, it's very bad politics, or it's very bad PR to do this. कि यार मत दे. नहीं, मेंटली आप ये कह दो, आप उनकी बातें सुन लो और आपको जो करना है ना आप करो. आपको अगर उनकी बातें अच्छी लगी, हो सकता है. मैं आपको एक एक्सीलेंट एग्जांपल देता हूँ. मेरे साथ जो हुआ, गुलाल सॉन्ग का फिल्म रात के मुसाफिर. सो रात के मुसाफिर तू भागना संभल के, पोटली में तेरी हो आगना संभल के, ओ रात के मुसाफिर. नाउ Piyush Mishra had already composed the song. It was given to me and Anurag Kashyap, so I made a tune. I didn't make a tune, even the tune was there. It was about arranging and अब अनुराग ने सुना, कश्यप ने, और बोला राहुल नहीं, मुझे पता क्या चाहिए. तू एक अकेला अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और तेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है. इस गाने को तू कैसे गाएगा? वैसा चाहिए. अब इसे कहते ब्रीफ. वो कोई मेरे को रेफरेंस गाना नहीं सुना रहा. अरे गाना का ट्यून ये है, तेरे दिमाग में उस टाइम पे ये चलना चाहिए. जब तू इसको गाएगा तो कैसे गाएगा मेरे को बता.
उससे निकला, जो अगर आपको चाहिए कभी सुन लेना, गुलाल फिल्म में जाके रात के मुसाफिर. And it came to me and I sang it. I sent him a version and he said, yes, that's what I want. I want you to, and then comes the difficult part, to recreate this in the studio. So it took me a few hours, but I managed to do it, and I played the guitar simultaneously with singing, and thanks to Hitesh Sonic, who was the music director, we managed to record it without A interfering with B, and give a listen to the song. And that's what briefs are supposed to be like. Alright? Now, Arun only says, what's your most memorable show to date? Man, you know, with Indian Ocean itself, we've done over 1100 shows, okay? With other bands and other people, I may have done a few more, maybe another couple of hundred shows. बड़ा मुश्किल है यार. किस चीज़ के लिए मेमोरेबल आप पूछोगे? सबसे बड़ी ऑडियंस मेरे ख्याल हमने आज़ाद मैदान पे एक बार गाया था, 25,000 लोग थे वहाँ पे. They had come from all over the country, and we sang, we performed there. That was memorable just for the sheer size of the audience. Beautiful locations, oh, too many to tell you. I really, you know, memorable shows का ही एक पूरा 1.5 घंटे का सेशन हो सकता है. So, sorry Arun. Viplav Vishal, can online ever replace the real live experience? No, it can't. मगर आप ये सोचो ना यार, 2 साल तक क्या करोगे? If recording could replace live, there would be no live shows. But look at how many of us have gotten used to watching cricket on TV. You can actually see the cricket much better on TV than you can by sitting in the 50 rupee stand or the 300 rupee stand in Eden Garden or Brabourne Stadium or whatever. But वो जो मजा है, वो इतने सारे लोगों के साथ वो इमोशन शेयर करना, वो जो लाइव जो होता है, वो जो दिल में आपको करता है, वो रिप्लेस नहीं हो सकता. और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे EDM के जो आर्टिस्ट थे ना, जो पहले सिर्फ EDM ट्रैक्स बजाते थे स्टेज पे, they have started bringing live musicians onto stage because there's something that happens spontaneously live that you just cannot replace with a recording. Okay? So that was for Viplav. So I don't think it will, but 2 साल तक तो देखना पड़ेगा क्या होने वाला है. What are your views on Indian indie scene, says Rhythmic Richal. Wait. Rachit. Favorite new upcoming independent artists, any plan to do collaboration? Anya, no collaborations anymore. In fact, Indian Ocean is releasing a bunch of new songs. We just released a new single, Akiyan Udi, the version of Nusrat Saab's song. And so in these 6 songs, we have done collaborations with 2 people. Not because we started out intending to do so, but because they said, hello, you better collaborate. And one of them was Pandit Vikku Vinayakaram. Vikku Vinayakaram ji, Ghatam player, जो शक्ति, the legendary शक्ति के साथ बजा चुके हैं. वो जब आपको कहें कि आपने पिछले तंदनु एल्बम में मेरे बेटे सिल्वा गणेश के साथ तो बजा लिया, मेरे साथ कब बजा रहे हैं? It is impossible to not do so. So he's collaborated with us, Vikkuji, on one of the new songs that's going to come out. And then there's a saxophone player called George Brooks, who lives in California, who has been playing with Pandit Zakir Hussain for 20 years. So he's a jazz saxophonist who knows both Hindustani and Carnatic classical. Can you imagine what an incredible sax player he is? So he suggested we collaborate. We were like, of course, George, we must. So we've done a song. We've actually played a few concerts live together in California when we go there, and a couple of times in India, in Jaipur, Jaipur, Goa, and Pune. We've done live shows with George. Okay. Views on the Indian indie scene. Actually, I think till this COVID thing came along, and still it will continue, this is true, that the Indian indie scene is at a better place than it ever was at any time in the past. I think the withering away of the music companies, stranglehold on us musicians has been a great thing for indies. The
Advancement of digital technologies has been a great thing where you can record your new stuff and add your synth VSTs and sit with somebody and make your music sound the way you want it to sound without having to pay through your nose or without having a record company pay through their nose and therefore strangle you to get the money back. You can now make the kind of music you want. I think Indian audiences have also gotten used to hearing new sounds, hearing new people. Witness Bollywood. Bollywood now has such a multitude of singers and a multitude of music directors. There are way more spaces to play live than there were. It will come back. Do not worry, it will come back. There are way more festivals than there were. And people are willing to give independent musicians a chance. But please do not think that this is an easy route or an easy life. Okay? Please. A lot of people think कि यार हम देखते हैं इन लोगों को जो सारे गामा जीत जाते हैं और वो फिर सडनली स्टार बन जाते हैं, हमको भी ऐसे स्टार बनना है. रियलिटी तो ये है कि जो लोग जीतते हैं बिना ये सब सारे गामा हो गए, they are damn good and they have spent years acquiring the technique and the ability and they have naturally gifted good voices. Okay, voices. So there's a lot of hard work which you will never get to see. And tell me, how many of those guys who win these competitions go on to become 2 years down the road, 2 years after they've won, artists that you can hear performing around you? Very few of them. Because it is a mistake to think कि वो जीतने से ही हो जाता है. नहीं होता है, बहुत कम है. सुनिधि चौहान, हर्षदीप कौर, मयांक चैंग, a few of the success stories. I don't see the rest. And imagine there used to be something, at one point there were 8 such competitions. That means there were 80 top 10 people, all good caliber singers per year. कहाँ गए? मुझे पता नहीं. Okay? Now, what's your take on instrumental music? Nice one. इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मुझे तो बहुत पसंद है यार. इंडियन ओशन पहले इंस्ट्रूमेंटल बैंड ही था. बट ये याद रखना कि हमेशा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक will occupy a different space, a smaller space, a niche space compared to vocal music. It's an unfortunate fact of life that the average listener prefers voices. Okay? करिए, बनाइए इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. बहुत लोग बनाते हैं. नहीं तो हमारी पूरी शास्त्रीय संगीत में सिर्फ वोकलिस्ट रहते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना. हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, मतलब अमजद अली खान साहब हैं. साउथ में कितने सारे फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं सब जगह. मगर दे आर फ्यू. Instrumental is great, is challenging, is tough, it requires years of work, but it still ends up being niche. And if you're content with that, don't resent vocalists. Okay? Alright. Other than live concerts, what can be alternate revenue sources for musicians? Very good question. So let me take you back to Indian Ocean. Opening days. Firstly, somebody asked, ऐसे ही आंसर कर देता हूँ कि इंडियन ओशन नाम कैसे आया. इंडियन ओशन नाम ऐसे आया जब इंडियन ओशन बैंड पहले फॉर्म हुआ था, एक बैंड फॉर्म हुआ था जिसका नाम नहीं था. तो एक बार वो लोग सब बैठ के, मैं नहीं था इंडियन ओशन में उस टाइम पे, मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था. लंच हो रहा था सुष्मित सेन के घर पे. इनफैक्ट सुष्मित सेन विल बी डूइंग वन ऑफ दीज लाइव सेशन विद यू गाइस. यू कैन आस्क हिम, ही विल गिव यू द सेम आंसर. नाम सजेस्ट हो रहे थे और सुष्मित के फादर भी वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन कैसे लगता है. और सब ने इंस्टेंटली बोला अरे यार मजा आ गया. So the name Indian Ocean was given by Susmit's father, suggested by Susmit's father, immediately accepted by the whole band. Okay, so get back to the first few years of Indian Ocean. In the first 5 years of our existence, 5 years, 90, 91, 92, 93, 94, okay, 5 years, Indian Ocean did a total of
7 concerts. Okay? 5 साल में हमारी टोटल कमाई एज अ बैंड, Indian Ocean, from live shows was less than a lakh. Okay? At that time there were 4 people in the band. So imagine that we made less than 5,000 rupees per year performing live. How did we survive? Well, musicians can do lots of things. The tabla player in Indian Ocean right now, Tohin Chakravarti, used to actually teach music at a school, normal school, not music school. और उसको तनख्वाह मिलती थी और वो दिन में बच्चों को पढ़ाता था और रात को डीजे सेट करता था, क्लासिकल म्यूजिक के साथ बजाता था, ये करता था, वो करता था, बहुत कुछ करता था. सो मैं उस टाइम पे क्या करता था, इंडियन ओशन से तो पैसे बन नहीं रहे थे, मैं बहुत कुछ करता था. पीपल ट्री नाम की एक दुकान है कनॉट प्लेस में, उनका मैं बुक शॉप चलाता था. मैं एक जागरण बैंड में बेस बजाता था. अम्बे माँ ओ अम्बे माँ, उसके पीछे बेस. आप अगर जानते हैं जागरण क्या होता है, जागरण में क्या होता है कि जो करंट हिंदी हिट फिल्म्स हैं उसको माता के भेंटे बना दी जाती हैं और बैंड्स आके परफॉर्म करते हैं. और आपको एज अ म्यूजिशियन हैव टू बी इंस्टेंटली एबल टू प्ले एनी सॉन्ग इन एनी स्केल एट एनी टाइम. इट्स एन इनक्रेडिबल लर्निंग एक्सपीरियंस, लेट मी टेल यू. I used to get 250 rupees a night. We used to play from about 11 o'clock till about 4:30 in the morning, continuously, with maybe a break for chai. अच्छा, फिर 1990s, 91, 92 के बाद आया ये पूरा चैनल के लिए म्यूज़िक बनाना, उसमें पैसे हैं. एड्स के लिए म्यूज़िक बनाना, उसमें पैसे हैं. डॉक्यूमेंट्रीज के लिए म्यूज़िक बनाना, उसमें पैसे हैं. So if you want to earn money as a musician, these are various avenues open to you. You can arrange other people's songs, you can help vocalists to make their songs, and you can charge, and please do charge for it because it's your skill that's being used. A lot of people will ask you to do things for free. Okay? Indian Ocean has a term for it. It's called gajar. गाजर लटकाना जिसे कहते हैं ना, आपके सामने गाजर लटकाते हैं. वो आपसे कहते हैं कि भाई साहब आप मेरे प्लेटफॉर्म में आके अगर बनाओगे ना फ्री, आपको बहुत फायदा होगा. झूठ हो सकता है आपको फायदा होगा, पर उस बंदे को भी तो फायदा हो रहा है. यू नो, दे मेक इट साउंड एज़ इफ दे आर डूइंग यू अ फेवर, एंड दैट इज जस्ट मार्केटिंग. लेट मी टेल यू, दैट्स समथिंग दे हैव बीन टॉट. दैट्स बिजनेस. यू हैव टू लर्न टू बिकम अ बिजनेस पर्सन. Don't give me this, oh I'm a creative person, I can't do business. छोड़ दो ये सब, ऐसे नहीं होता है. In fact, there's a fantastic book which you should read, written by Shubha Budgal. What's it called? Chasing Miss somebody. Shubhaji has written a fiction book. Please look it up. It's awesome. It's small stories about the music world and क्या क्या होता है और लोगों की egos and so on and so forth. Okay, how can an independent artist grow? Man, by making more music, by performing as often as you can, even if you give in to the gajars. हमने भी लोगों के लिए फ्री बजाया और अब काफ़ी देर बाद हम सब ये लोग ये कहते हैं कि अरे हमारे लिए जाकिर हुसैन साहब फ्री बजा गए, आप पैसे क्यों मांग रहे हो. मेरा जवाब होता था कि भाई जाकिर हुसैन के पास मेरे से लाख गुना ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो फ्री बजा सकता है. मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले फ्री. कुछ तो दो भाई, कुछ तो दे दो, ऑनरेरियम दे दो, मानधन दे दो. फ्री में मत बजवाओ, फ्री में काम मत करवाओ हमसे. और ये अनफॉर्चुनेटली यार म्यूजिशियन इतना हंगरी फॉर एड्यूलेशन कि ऑडियंस ने 10 ताली बजा दी हम खुश हो जाते हैं. हमारी ईगो को अच्छा लगता है कि यार उनको पसंद आ गया है. एक सुंदर महिला या आदमी ने आप पे स्माइल कर दिया, आपने it's good for a bit, but don't let it become a habit. Really, I'm telling you. And you might say, and I used to think the same. जब मेरे बाल काले थे और मैं ऐसे ही प्रश्न सीनियर म्यूजिशियन से पूछता था और वो ऐसे ही कहते थे जैसे मैं कह रहा हूँ, और मैं कहता यार तेरे लिए तो आसान है, तेरा तो हो गया. Unfortunately, it's a similar thing. Like, you know, when your parents tell you कि don't do that and you say why not,
and then 20 years later you find yourself saying the same thing. So there are some truths to what the older guys say. Listen to it sometimes. Retain your rebelliousness, retain your creativity. But कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाई ये मत कर ज़्यादा, नहीं तो फंस जाएगा. ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में. Okay. You should start a chat show. I should start a chat show. I chat so much. Anyway, अदर लाइव कॉन्सर्ट हो गया. अब बट अभी तो सब बंद है. Businesses have suffered. Who's going to pay? Doesn't it all depend on the lifting of lockdown and return of normalcy? Isn't it all part of a chain? Yes, Viplav, it is. यार देखो, tough times will come, and you guys are probably facing the toughest period of your lives as musicians. लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, नॉर्मल सी वापस आएगी, मगर मे बी इट विल बी अ न्यू नॉर्मल. मे बी यू विल ऑलवेज, you know, I used to sometimes when traveling abroad, like, you know, either doing concert in Singapore or in Taiwan, or maybe even flying through Hong Kong or something to parts further west, the number of people there who wear masks all the time. I have a feeling we'll be doing this for a long time. Don't think that सब कुछ ठीक हो जाएगा. सब कुछ ठीक नहीं होगा. काफ़ी देर तक आप मास्क पहनोगे. पहले हम लोग एयर पोल्यूशन के लिए पहनते थे, अब हम कोविड के लिए पहनेंगे. और ये आप ले लो कि सबको बाय एंड लार्ज एंड में जाके कोविड होगा. But most of you, definitely, maybe not most of me, because I'm a white-haired, older than 55 man who's been smoking for a long time. I'm high risk. Most of you younger people are not high risk. It'll come, you might feel sick for a week, you will stay at home and you will be done. And your body will then have immunity. At least the first round of immunity you will have. That doesn't mean you can't fall. Like flu, हमको कितने बार हो चुका है यार. Think of this as a more dangerous flu. We will all get it, and then we will continue with our lives the way we have continued with typhoid and cholera and measles and chickenpox and etc. and dengue and chikungunya. कम नहीं है. देखो, कोविड में इतना डर इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप एनीवे छोड़ो. मैं आई डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन द डिस्कशन अबाउट स्पैनिश. यार निखिल मट्टा गुरु, प्लीज गिव अस सम टिप्स ऑन कंपोजिंग म्यूजिक आइडियाज. हाउ? आप इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठ जाओ, जो आपका इंस्ट्रूमेंट. एक दूसरे बंदे ने पूछा था कि एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाओ कि बहुत सारे. देख, अगर आपको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना और उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत अच्छा बनना है तो एक ही इंस्ट्रूमेंट सीखो, उस पर रगड़ते रहो. मगर मैंने ये भी देखा है कि जैसे गिटार प्लेयर्स जो होते हैं, they find it easier to play other stringed instruments, you know. So if you give them a guitar player, a bass, they can become fairly decent bass players. If you give them an oud, they can start playing the oud, they can start playing the mandolin, they can start playing the ukulele. And every single instrument, like I was telling you, pushes you in different directions of composing. Firstly, because the tuning is different, the sound is different, the style of playing pushes you into certain styles, okay? Shivashish Banerjee, sure. I play with a Bengali folk band. I try to apply your style. Your style is me. Don't try to apply my style. Try to listen to what I've done and then let your own heart take over. Soundscape and playing. See, I use no gadgets whatsoever on my bass guitar. Okay? Whatever sounds I play on my bass, I play using fingers and technique, and it's stuff I have developed over the years, as will you. Okay? Rahul, thanks for answering all these questions so patiently. How important promotion? Okay. So, non-musical tips for musicians. It's very important. Like I said, do not think that saying, I'm a creative person, I can't do this, I need a manager. एक वो है एक्सट्रीम कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा मैनेजर सब कुछ करेगा. क्यों करेगा? तो मैनेजर को कितने पैसे देगा ये करने के लिए?
वैसी कंगाल है, पैसे नहीं बन रहे, मैनेजर को पैसे देगा, दोस्त को मैनेजर बना देगा सडनली, ये सोच के कि यार वो ना कर देगा, क्यों करेगा वो तेरे लिए, उसको उसके भी अगर पैसे नहीं बन रहे तो वो क्यों सीरियसली अपना टाइम खर्च करेगा. सो हियर आर फ्यू थिंग्स दैट musicians should know. One, PR skills are very important. Two, maintain your dignity. Don't let other people browbeat you. Talk to them one-on-one. Talk to them like they are your equal. Respect everybody. But don't let them talk down to you. If they're talking down to you and it's very clear, पैसे ज़्यादा मांग लेना. ठीक है. Number 3, get to know some journalists. It helps a lot. Number 4, when you're on stage, you are performing. People have come to see you perform. नीचे देख के ऐसे अपना गाना बजा के मत चले जाना. You need a stage act. I'm sorry, but people come to watch you and hear you. If they just wanted to hear you, they would go to SoundCloud or wherever it is that you release your music. Okay? Don't be ashamed of dressing up differently for stage. Don't be ashamed to have a persona on stage which is different from your normal persona. यार हमारे भरतनाट्यम डांसर्स आप देख लो, हमारे जो क्लासिकल डांसर्स हैं, इतना पूरा मेकअप और पूरा एक स्टाइल कपड़े पहन के एक वो they prepare and that preparation makes them ready for being on stage. Why do you think this is unimportant? This has evolved over hundreds of years as a style. Get your style. Look different, be different. Talk to them about your music. Talk to them about your songs. Don't think the music will speak for itself. It does not. All the time. Sometimes it does. Sometimes it says things you may not even know it's saying. But talk to the audience. Okay? Alright, Arun. I've struggled with learning the piano. Man, I am struggling right now to learn the piano. Years of lessons and made little progress. Because maybe I will say you didn't give enough time to practice outside the lessons. Did you? I mean, I learned the guitar by playing it for 8 hours every day by myself. Not only when teacher saab came. Okay? There is no age of too late to learn. You're over 40, so I'm over 55. I'm still trying to get my left hand to work. It'll work because I am teaching myself. You can learn. Okay? अरुण लगे रहो, पर टाइम देना पड़ेगा. ये नहीं कि मैं कॉर्पोरेट आदमी हूँ, मैं रात को 1.5 घंटे हफ्ते में एक बार बजा के मेरे को अच्छा हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं होता भाई. किसी भी चीज़ में बिना टाइम देके अच्छा नहीं होता. ऑलराइट. So JS says, which is your favorite Indian Ocean song? I don't have a favorite Indian Ocean song. Really. Amit Kilam does. For him, it's Bhor. I don't, because, I've put my sweat and my blood and my mind into every single song that we've made. And each one of them has a different part of me in it. So I can't have one. It's like, asking a parent ki favorite bachcha batao. ज़्यादातर नहीं बताएंगे. Even if the bachchas are not to hear the answer. बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें मेरे को ये अच्छा लगता है, इसमें मेरे को ये अच्छा लगता है, उसमें ये चैलेंज था, इसमें ये चैलेंज है, इत्यादि इत्यादि. फ्रैंकली मेरे पास कोई ना ही मेरे पास कोई फेवरेट म्यूजिशियन है, क्योंकि हर म्यूजिशियन में अच्छी चीज़ें दिखती है. तो that's where we are, and we are now an hour into this. I can go on. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग बताओ, अगर आपको one time in your life when you were not happy making music. Okay, I'll tell you. When Oshim died, Oshim was with Indian Ocean from the beginning. He was part of Indian Ocean before I joined. Together we spent 16 years on stage. Or 16 se bhi jana hai. 19 years together, or 18 years together, as friends, as people composing together, as people spending possibly more time together with each other than with our families, especially when we were touring. He died. And it seemed like the left part of the stage had gone.
They were new people. But what broke my heart was that the audience was तो मुझे लगा यार तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा कि वो आदमी चले गया है. Is it like a finger in water? कि आप जब उंगली निकाल दो पानी को नहीं पता चलता. दिल टूटे, एक तो जो दिल भी टूटा हुआ था और उसके बीच में स्टेज पे परफॉर्म करना. और that was the time when I was unhappy and playing music on stage, very difficult. At which point a friend of mine told me something very interesting which I think you guys should listen. This friend of mine, and she's a very empathetic, intelligent woman. Luckily I have a lot of empathetic, intelligent women friends. I think women are underrated by a lot of men. Really. They're fantastic people, a lot of them. But they can be as much of badmash and खराब लोग as men. ऐसा कोई मैं ब्लैंकेट सबको पास नहीं दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि दोनों जेंडर्स के दोस्त होने चाहिए आपकी ज़िंदगी को एनरिच करने के लिए. दोस्त, इश्क नहीं, दोस्त. क्योंकि दोस्त तुमसे ऐसी चीज़ें कहेगा जो लवर नहीं कहेगा, इतना भी बता देगा. ओके. So she told me that, Rahul, why are you taking it as if they don't miss Oshi? Maybe they are encouraging you to continue without him. Maybe they are saying, yes, it's changed, but we still love the music. Why don't you see it from that perspective? And that was like a wow moment for me. And when these wow moments happen, then I don't react instantly, because as a musician over the years, here's another musician mantra, Rahul Ram mantra. High standards, low expectations. Okay? Set yourself high standards. Expect very little from people. Alright? So when I hear things like this which make me go wow, I actually let it sit in my head for a week and let it go through various. Let me remember it at different times. And then I realized that, yeah, maybe she's right. And maybe this is, may or may not be right, but this is a great attitude towards continuing without your friend and bandmate. And that's a very long answer to a question about did you ever feel bad making music, right? How did Aisi democracy get started? Okay, so nice story. A friend of mine called Spandan Banerjee is a filmmaker, and he had made a couple of films in which Sanjay Rajora had acted. So I met Sanjay at Spandan and Ruplina's house a few times. And then they told me, Sanjay na ek stand-up comedy kar raha hai. तो मैं सज्जे के चले, तो मैंने कहा चलो यार, मैंने तो कोई इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी सुनी नहीं, कभी भी नहीं सुनी थी. तो हास्य कवि सम्मेलन अलग चीज़ है, मगर ये जो नया स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गया है, तो मैं गया सुनने. और वहाँ पे ना, इट वाज द नॉर्मल डे वेयर अबाउट 6 or 7 people take the mic for about 15 minutes each, and everybody else spoke in English, and everybody else sounded like they were copying Western people, and everybody made misogynistic jokes or using their ethnic identity as part of their humor. Sanjay came and spoke in Hindi, and he blew me away. तो उसके बाद जब हम लोग बैठ के दारू पी रहे थे और सेलिब्रेटिंग संजय सक्सेस और व्हाटएवर हिज नाइस शो, एंड आई टोल्ड हिम कि यार मेरे को पता लग रहा है कि तू जो कुछ कहता है ना, उसके साथ में ना एक गाना आ जाना चाहिए. और उस टाइम पे मेरे को लगा था कि कोई हिंदी फिल्मी गाना या जो भी है जो उसके जोक को मैच करेगा, जो उसके बारे में कुछ करेगा. हमेशा मेरे दिमाग में ना गाने आते रहते जब लोग चीज़ें कहते हैं. तो उसने कहा कि सर ये कौन करेगा. मैंने कहा मैं करूँगा यार. सर आप तो बिजी हो. मैंने कहा नहीं पूछ के तो देख. उसके 6 साल बाद
संजय ने मेरे को फ़ोन किया और कहा कि सर मैं और वरुण ग्रोवर, अब वरुण ग्रोवर से मैं मिला ही नहीं था, बट आई हैड मेट हिज वर्क. I had sung 2 of Varun's songs, made one, composed one for a film and sung one for a film. Longer story, which I'll tell you about later. But I was like so impressed with the way this guy wrote. He said, and I had no idea that he does stand-up comedy because I was not part of the scene at all. So Sanjay told me and Varun Grover think of doing something, and याद है आपने मेरे को कहा था कि आप करोगे, करेंगे, करें. और ये मई में था. मई में म्यूजिशियंस वेले बैठे रहते हैं क्योंकि शोज़ ख़त्म हो गई, गर्मी बहुत है और अब शो का सीज़न शुरू होगा सितंबर अक्टूबर में. तो मैंने कहा करते हैं यार. सो आई एक्चुअली मेट वरुण फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्काइप एट संजय's house, and then I met him in person on the evening of our first show, and we thought we'll do a couple of shows just to see how it went. And that was 6 years ago, and today ATD has done over 100 shows and continuing, and I'm having a blast. Long answer to short question. Any more? भाई Songdew ये कब तक चलेगा बॉस? From the ruins. Oh, awesome. Yes. What are you drinking? पानी यार, पानी. ये देखना, बोतल में कभी एक पॉइंट पे बॉम्बे सफायर जिन था, अब इसमें पानी. What is your workflow while creating a song? All right, good question, good question. How do you start? Do you make chord progressions first or the rhythms? Every song has a different story, really. In some, the lyrics come first, and the lyrics, by their very meter, suggest certain ways for the tune to go. In Indian Ocean, we actually jam and we come up with something we like, and then we take it forward and then do la 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 type singing at points, and then give it to a lyricist to write. Sometimes the rhythm pattern can make you start playing something on the bass, and that can lead to a song. It changes all the time. There is no one way. Neither should there be one way. अच्छा, डू म्यूजिशियंस दुनिया से, यार मेरा इंस्पिरेशन तो दुनिया में रह के मिलता है. मैं दुनिया से अलग होना ही नहीं चाहता हूँ. मैं दुनिया का पार्ट होके म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ. मैं दुनिया के बारे में म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ. मैं दुनिया के लिए म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ. अपने लिए म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ. अबाउट द वर्ल्ड. I don't want to cut my that. I'm not that kind of a musician. Maybe there are people who say, oh, I didn't hear anything and I didn't do anything and I'm separate. No. In fact, I find that attitude quite irritating, frankly. तुम अलग हो, ठीक है, तो फिर तुम्हें दूसरे लोगों के लिए म्यूजिक बनाने की इच्छा क्या है? अपने लिए बना, घर पे बैठ. मुझे तो बड़ा मजा आता है यार जब ऑडियंस मेरे को वाह 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 कहती है. सच बता रहा हूँ. ईगो को अच्छा लगता है यार, क्यों नहीं लगेगा? और बट बनाते वक्त मैं ऑडियंस के बारे में नहीं सोचता. बनाते वक्त मैं कॉम्पोजिशन पे फोकस करता हूँ कि यार ऐसे बनाएगा, अच्छा ये बैठ रहा है, ये कि तुम्हें अच्छा लगा. हाँ, इंडियन ओशन ऑल्सो वर्क्स द सेम वे. वी डोंट मेक सॉन्ग्स फॉर ऑडियंस unless it's a paid composition. Like somebody has said, ये फिल्म है, ये थिंग है, इस अब ये सिचुएशन है, अब बनाओ. ठीक है, फिर हम उनकी बातें सुनते हैं, उन्हें अच्छा लगा नहीं लगा. हम जब अपने गाने बनाते हैं हम किसी की बात नहीं करते. It's almost a little bit no, right? So we make music for ourselves. I make music for myself. When I want to perform it in front of an audience, I want it to have reached a state. Indian Ocean, in fact, plays unfinished songs in front of audiences. Because sometimes live में एक मैजिक हो जाता है. Sometimes हमने गाना जब पहली बार लाइव बजाया, हमको समझ आया कि नहीं वो वहाँ पे तो ठीक लग रहा था, पर तुम्हें एक्चुअली बदलना चाहिए. सो तुम बदल देते हो लाइव परफॉर्मेंस के लिए. कुछ गाने लाइव में अलग स्टाइल में अच्छे लगते हैं, कुछ गाने रिकॉर्डिंग में अलग स्टाइल में अच्छे लगते हैं. सारा वेरिएबल है सर. देयर इज नो वन वे ऑफ डूइंग एनीथिंग एवर इन द वर्ल्ड. देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल एवर. ओके, एनी टिप्स ऑफ स्टेज इंटरेक्शन विद द ऑडियंस सर? ओके, फर्स्ट आई विल गिव यू अ नाइस स्टोरी अबाउट two men who I know who are
and I think they won't mind my telling you this. Rabbi and Mohit Chauhan. So, एक बार Rabbi was going to come on stage and jam with Indian Ocean. And he came on stage in his trademark goggles and अशीम बदमाश है. शाम को शो चला था 7:30 बजे, तो अंधेरा हो गया था, गॉगल्स की जरूरत नहीं थी. तो अशीम कहता है यार राहुल अगले बार मैं भी स्टेज पे गॉगला पहन के आऊँगा. तो रब्बी सुनता और कहता है भाई साहब ते मफलूर भी चाहिए, गॉगला थे वही और मफलर भी पहनता था. तो हम सब हंस दिए, दैट वाज अ नाइस रिपार्टी एंड सो ऑन सो ऑन. बट आई आस्क्ड हिम लेटर ऑन, सो रब्बी व्हाट्स इट? And he told me, and this is such an honest man, which is why I love him, that Rahul, I'm actually very nervous. I wear goggles so that they can't see my eyes. How nervous I am. सोचो, रब्बी दुनिया भर में जाके परफॉर्म कर चुका है. Okay, I think I got cut for a bit. I'm live again. The other story is Mohit Chauhan. Like I told you guys earlier on this, that I played bass on the Bunde album, and so I played a few concerts with Silk Route. And Mohit, you know, आया था हिमाचल से. He wasn't very happy with his English, and he wasn't very easy with audiences. So he used to make me do the talking. यार सर आप कर दो, आप बोल दो स्टेज पर. मोहित नहीं यार मैं तो बोल दूंगा, बट आई एम अ पार्ट-टाइम member of Silk Route. I am not a member of Silk Route. It doesn't sound or look good that I talk about your songs, and in fact I may not be able to talk about your songs the way you talk about your songs. And I encouraged Mohit. In fact, I was also talking with Khalid of Parvaz. और मैं खालिद से बता रहा था यार खालिद स्टेज पे ना ऑडियंस के साथ you have to make them your own before you played a single note. Usha Uthup is a master of this. She is so incredible. You should see her. वो किसी भी ऑडियंस को ना अपनी तरफ कर सकती है. उनके पास 45 साल का तजुर्बा है, मैं मानता हूँ, मगर वो पहले भी ऐसी थी. It's very important. You need to talk to them. You need to be honest with them, and you need to let a little bit of you show. Honesty with a touch of humor is a great thing. Don't think कि मैं ना चुपचाप जाके बजा दूंगा गाना. Hello everybody, thank you for calling me here, and the first song is. ऐसे तो ना होता है यार. मिरर के सामने कर लो, किसी दोस्त के सामने कर लो. दोस्त हंसेगा तुम पे, पर एटलीस्ट घर के ऑडियंस के सामने करके तो देख लो, to get over that feeling. Alright? Oh, how did you end up with 10 dogs at home? Yes, man, it's not me, it's my wife. She's the crazy dog person. And you know, it's amazing. Like, they've been silent for over an hour. एक चू नहीं निकली. बीच में एक तरह में थोड़ा सा बहु हुआ था. But they're cooperating with me today. They're not... and actually, my wife has taken 4 of them off to work. So, there are not 10 dogs at home right now. She takes them to work. It's crazy. They had surgery today. She took 4 dogs off to do surgery. अब वो वहाँ हैं और अपने उनके सेंटर में आएंगे वापस खुशी खुशी. ठीक है. Komal Chandra, have you ever said no to good offers, filmy or anything else? Yeah. Okay. Komal, yes. To be very, very frank, there was an offer from a very, very famous film director. Okay. To do music for film. That film director I've watched. I'm not taking names. Let me not. क्यों बात. वॉल टू वॉल कारपेटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक होता है जब चाहिए या नहीं चाहिए. इनफैक्ट समटाइम्स दैट म्यूजिक टेक्स अवे बिकॉज साइलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनुराग कश्यप अंडरस्टैंड्स दिस, बट दिस गाय डज नॉट. प्लस
he thinks he's such a big name that working with him is in itself enough of an honor so that he can get away with paying you very little money. अरे इनके साथ काम कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो? इतने में मान जाओ. फिर उनसे बात होती है जो उनके मैनेजर ये जो भी मना कर दिया. बोला सर इतना म्यूजिक तो हम बनाएंगे, इस पैसे में इतना म्यूजिक नहीं बनता. There is no point. Why should I? मना कर दिया हमने. और no regrets. There was another time when, I'll tell you the name of this film, not that guy, there's a different film called Shootout at Lokhandwala. They sent us, they said, we want you to make a song. So we said, okay, कुछ तो बताओ, कहाँ के लिए फिल्म में, क्या हो रहा है, आगे पीछे. नहीं आप कोई भी गाना डाल दो, हम डाल देंगे फिल्म में. भाई यार ऐसे क्या है, मीनिंगलेस स्टेटमेंट मत दो हमें. दिस इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट. सो देन दे सेंट अस द स्क्रिप्ट. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया और पहले 20 पेज में देवर सम 10 मर्डर्स, 20 रैंडम बीटिंग्स, 2-3 रेप. मैं कहा यार इसमें नहीं करना मेरे को. हमने थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे, मगर हमसे नहीं. क्योंकि आप वो स्क्रिप्ट भेज के भी नहीं बता रहे थे कि स्क्रिप्ट में कहाँ हमारे. जैसे स्क्रिप्ट पढ़ लो, जहाँ तुम्हें लगता है गाना डाल देना. हरी what rubbish. So yes, we have said no, and we have not regretted it. Now something has happened. Yes. Rahul, Rahul, I'm a 20-something guy going against all odds to make it happen, but you've seen life and you know things. Is it really true that if you keep at it long enough, be consistent, you'll make it? Aman, I'm very sorry to... Haha! चलेगा यार. मिल भी जाए तो क्या है ये नेटवर्क, अगर मिल भी जाए तो क्या है ये ताजों, ये तख्तों, ये महलों की दुनिया. मिल गया राहुल खन्ना, मिल गया हमको तेरी, मिल गया. अब क्या करें? शुड वी वेट फॉर द पीपल टू जॉइन और शुड वी... अब क्या यार, हो गया यार, 1.5 घंटा हो गया. बताओ. If you have, see, because it got interrupted, so I've A, forgotten where we were, B, I don't know what questions were on. मिल गया, आ गया सर, कंटिन्यू द शो मास्को. Okay, so actually while this I was looking at this saying reconnect. मैं ये गाना गाने लग गया क्योंकि I was answering अमन झा's question about what. रिदमिक रचित बोल दे यार, मेरा दिमाग ऐसे ही चले जाता है यार, कुछ तो बता. अमन झा के तो मैंने तो 2-3 प्रश्न आंसर किए हैं. बता दे यार, कुछ तो बता दो. चलो तब जब तक आप बताओ तब तक मैं गाना गाता हूँ. Oh, 20-something guy. Okay, yeah. Aman Jha. The short answer is no. I'm sorry. But it's like playing cricket. Any art is a chancey matter. I'll give you what happens in Bollywood. Okay. बहुत सारे लोग, you'll be shocked at how many people come to Bombay to become film stars. Okay? Because actors are the main thing in Bollywood now. Or how many musicians come to Bollywood again, Bombay, to become Bollywood musicians, to become a Pritam or an Anu Malik, or to become singers, to become an Arijit Singh, or to become... Hota kya hai? Some make it, some don't. And believe me that no matter what anybody might tell you, especially these corporate types and these life coach type people,
there is an element of chance to things. I do not agree that people say that if you work hard enough हो जाएगा. Sorry, sometimes नहीं होता है. ठीक है. इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ना चूल्हा चलाने के लिए दूसरे काम करने लग जाते हैं. तो आए थे स्टार बनने, उनको कहा कि यार तू इस प्रोडक्शन पे थोड़े दिन काम कर ले. प्रोडक्शन पे काम किया, अच्छा लग गया, पैसे आ गए, काम भी अच्छा था, उसको इंटरेस्टिंग लगा. उसने कभी सोचा ही नहीं, कभी जिंदगी भी नहीं किया था. ग्रेजुअली वो प्रोडक्शन असिस्टेंट बन जाता है, थोड़ी दिनों बाद एडी बन जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर. सिमिलरली म्यूजिशियंस कम, सम ऑफ देम जॉइन स्टूडियोज, some of them start working with music companies, some of them start doing other things. You know, it's where life takes you, frankly. Just being honest to yourself and sticking to it is not, I'm sad to say, a guarantee of ultimate success in that field. I will tell you another thing, which I was telling somebody that day. Almost nobody who's won the Nobel Prize, okay, did their PhD in the subject in which they won the Nobel Prize. In the sub-field, subject ठीक है, शायद केमिस्ट्री किया हो, पर उस सब फील्ड में नहीं तो इसने PhD किया था, क्योंकि लाइफ उसको अलग अलग रास्तों पे ले गई. लाइफ ले जाएगा आपको अलग अलग रास्तों पे. एंड यस, यू आर राइट, जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार, दैट सॉन्ग, the Apostles' song it is called. Look at all my trials and tribulations sinking in a gentle pool of wine. I used to know the entire opera beginning to end. I used to know several operas beginning to end. मजा आता था मेरे को. I used to love the music. Love. JCS is a great opera to watch. Fantastic music, man. Andrew Lloyd Webber. Oh, Tim Rice and Webber. Oh, amazing. I used to know Oliver inside out. I still do actually, because I took part. I acted in a few musicals when I was in school, because our school used to do a musical every year, and this continued for 8 years. Quite an amazing school, St. Xavier's, Delhi. Yeah. अच्छा, अब देखो, अब मुझे लगता है कि अब खत्म कर देते हैं. हाँ? Do you think the listening? Oh, nice question. Sorry, Alfred. Yes, Sunny. Do you think that the listening span of audience nowadays is very short, especially when you make short songs? मैं उल्टा कहूँगा. मैं कहूँगा कि हमें इन रिकॉर्डिंग और म्यूजिक इंडस्ट्री वालों ने शॉर्टर सॉन्ग्स की तरफ पुश किया है. और अब वो कहते हैं कि अगर आपके पहले 10 सेकंड में हुक लाइन नहीं आई तो गाना फेल है, नहीं बजेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. आपको 1000 ज्ञान दिया जाता है बाय अ ब्लडी म्यूजिक कंपनी एग्जीक्यूटिव who probably never made a song in his life. Who are they? And why do they think our audiences are so stupid? Huh? I disagree with this notion that because हमारे हाथ में रिमोट आ गया है, हम अगर आपका हुक लाइन पहले मिनट में नहीं आया, या आपका, यार तू मेरे को ये बता, तो फिर 90 मिनट की फिल्में क्यों बनती हैं? बना फिर तू आधे मिनट का फिल्म. नहीं बनाएगा ना, क्यों बना रहा है? बड़ा ख्याल, नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली, सब खत्म हो जाएगा. क्यों होगा? तो तुम्हें किसने बता दिया है कि ये गाना 3 या 4 मिनट का होना चाहिए? ठीक है, फिल्म में हो सकता है. हमें जब फिल्म वाले कहते हैं ना कि आप गाना बनाओ, हम उनसे बोलते देखो भाई, हम अपना नॉर्मल गाना बनाएंगे, तुम उसके बाद एडिट कर देना जैसे तुम्हारी इच्छा, क्योंकि तुम एडिट तो करोगे, हमसे 3.5 मिनट का गाना बनता नहीं है. और वो मान जाते हैं, बिकॉज देन दे माइट बी स्टफ इन दैट सॉन्ग व्हिच दे कैन यूज इन अदर प्लेसेस. यू सी, सो इट इज रॉन्ग टू गिव इन टू दिस काइंड ऑफ टॉक. Yes, maybe you should be able to grab them in the first minute. But grab does not mean the overall song should be short. यार अभी इंडियन ओशन एक गाना रिलीज किया, I don't know if you guys have heard it, अखियाँ उड़ी दिया. Just go and check it out on the Indian Ocean Facebook page. It's an 11-minute song. But I think it starts grabbing you from the beginning. I think. If it doesn't, चले जाओ, मत देखो. If it does, खुश रहो, दूसरों को सुनने के लिए. Alfred, yes, I'm with you, man. They just talk crap. Sorry, crap वैप बोल रहा हूँ मैं. Songdew बुरा मत मानना, ऑडियंस बुरा मत मानना, बट ऐसे ही है.
Yes. Rather than trying to control the audience, work on the soul of the music. Okay. Yes, Arununi, thanks, man. Thanks for the info. Airing every Friday night during the lockdown. Andrew Lloyd Webber musicals. Yes, I know. Unfortunately, I'm not a watcher of Netflix. मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ. मैंने पता है इस पूरे लॉकडाउन में टीवी का एक तो कुत्ते चबा गया टीवी का रिमोट है और रिपेयर भी नहीं हुआ. मैंने कोशिश भी नहीं की. मैं ये अपने कंप्यूटर पे, ये जो कंप्यूटर है पीछे मेरा, उस पर भी टीवी चल सकता है. मैं आई कैन कनेक्ट टू द लैपटॉप एंड ऑल दैट. देखता ही नहीं हूँ मैं. नेटफ्लिक्स नहीं है मेरे पास यार. आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू कीप मी बिजी. बट आई हैवंट इवन रेड अ बुक. आई हैव बीन रीडिंग बुक्स. आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स टू रीड. ये देखो इधर मैं आपको दिखाता हूँ. उधर दिख रहा है बुक शेल्फ, किताबें ही किताबें. अब मेरे पास काम है, मैं मजे कर रहा हूँ. मेरे को एक्चुअली काफ़ी आई हैड अ रियली हेक्टिक फेब्रुअरी एंड आई वाज प्रीटी ग्लैड. टुडे आई वोक अप टू एन अलार्म बिकॉज आई हैड टू वेक माय वाइफ अप. एंड पानी खत्म हो गया था तो मेरे को पंप चला रही थी घर पे पानी भरने के लिए. आफ्टर आई थिंक अबाउट a month and a half or 2 months I woke up to an alarm. Almost 2 months. नहीं, not 2 months. ओहो इतना सुकून है यार बिना अलार्म के उठने में. मैं क्या बताऊँ आप लोगों को. मैं आजकल आराम से रात को 3-4 बजे सोता हूँ, सवेरे 12-1 बजे उठता हूँ. गर्मी है तो क्या हुआ, एटलीस्ट रात के ठंड में तो आराम मिलता है, इत्यादि इत्यादि. टेक लाइफ एज इट कम्स यार. ओके, विद दैट आई विल से गुड बाय टू यू गाइज. वन सॉन्ग I'll try and sing you a song which is again a song made for a film. I don't think it's been released yet. I have no idea. वो चढ़ बैठा आसमान में बादल बन फहराया. वो चढ़ बैठा आसमान में बादल बन फहराया. जान न पाया खौलते पल में आग और जल की माया. वो चढ़ बैठा आसमान में बादल बन फहराया. जान न पाया खौलते पल में आग और जल की माया. उमस ने उसको पकड़ लिया जब बूंद बूंद याद आया. आपका कुप्पा भर ही था वो, क्यों जबरन इतराया. ये जग मायावी चक्कर है, ख्वाब में ख्वाबों का मुश्किल सिलसिला. ये जग मायावी चक्कर है, ये जग मायावी चक्कर है. Actually, this is from a film called Kanpuriye, and it's released on Netflix. Check it out. And thank you very much. You guys were great, man. It was so nice to talk to people who have interesting things to ask, who don't ask the normal, old, boring questions. And I know a lot of you are musicians and practicing musicians, so you know what I'm talking about. And I know the questions you're asking because I've been in the same space. Thank you, and let's all give a big thumbs up to Songdew for setting this up. I think tune into the other sessions. There's going to be a lot of good musicians, and have fun and enjoy lockdown as much as you can. मेरे घर पे तो लाइव पिज्ज़ा बन रहा है यार. मतलब फ्रेश मैदे से लेके पिज्ज़ा बना रहे हैं हम लोग. रागी डोसा बन रहा है, प्रॉन करी बन रहा है. आज मैंने नागा पोर्क बनाया है. आहा, मजा आएगा आपको. बाय. अब मैं बंद करूँ, ठीक है? हो गया.